Yellow people. This is me doing an audio check. You can hear me, you can see me. Please let me know. Okay. Hello, Sahil. Hello, Lime World. Hello, Yuvraj. Hello, Zeel. Hello, Kevin. Kevin, it is very weird to say Kevin. It is KJ Kevin 1043. No. Hello, Akileshwar. Hello, Ronit Wankede. Right now, I'm looking at picture well. I'm looking at YouTube comments because I haven't really started. Once I start YouTube comments, hatke, I will go to the PPT. What PPT? Some vanilla pages. So Sahil Bansal. I've added him as a moderator. So he will hopefully take care of any questions and concerns that you have. He will relay them to me. Thank you, Tejas. I am audible. How goes the day? Cat notification is out. Oh my God. Have the stress levels gone through the roof? I'm waiting till 8:05 and then I'll start answering all the questions that have been sent in. Okay. Ideally, your stress level should not change. At a very individual level, nothing has changed. Whatever you had to study earlier, you have to still study. But one of your junior from FMS used to say, don't let exam control you. Exam should be in your control. Coffee dialogue. The entire point is you, in terms of will they extend the last date from 13 September a further week or two? See, historically, they've also always extended. All exams have tended to extend their final day of registration by 5 to 7 days. वो मेरे जूनियर नहीं है भाई, वो अलग सर है, डिफरेंट कैटेगरी, तो वो अलग ही हुआ। हाँ, तो पिक्चरवेल यूजुअली दे डू एक्सटेंड इट अ वीक. अरे ही वाज माय जूनियर बट इट्स नॉट लाइक वी वर ऑन कैंपस एट द सेम टाइम. अलग ही कहानी है. प्रणव पद सर बढ़िया है. he I think he graduated in 2018 as in when he was entering college, leaving college. तो अलग है. हाँ, तो वो पिक्चरवेल
Usually all exams have their dates extended by a week. 5 to 7 days सबका बढ़ता ही है deadline. तो एकदम ही chill. Hello, Sachin. ये भी किसी ने बना के दिया मेरे को. I am technologically handicapped. Okay, it's 8:05. I'm starting. So I had asked people to send over the questions related to Foxmarks and CAT 2023 prep, and a lot of them have. So let's get to individual questions. I don't think it will be a long session. It will be somewhere close to 30-35 minutes if I'm able to control my own wandering thoughts. So let's start. First question I had received. I haven't really credited the person who is asking the question because some questions are not very flattering to individuals. Okay. So good evening, sir. By now I've solved upwards of 400 LRDI sets. So commendable. I know who this person is. I know he's present in live chat right now. So wonderful on your end that you have solved 400 plus LRDI sets because this question was sent over a fair few days back. By then I'm sure you've solved some more. This includes only the sets I've solved on my own, but in mocks, as soon as the LRDI section appears, I get a bit panicked seeing the first set, because of which the decision making, which you've also discussed in the DILR mock analysis video, gets affected. And this in turn affects my set selection and I end up wasting time on a comparatively difficult set. Any actionable insights on how I can handle this? Now see, where this is stemming from, it could have two potential causes. The first cause is you are entering into or you're starting off a test with the mindset that I have to attempt all questions. I have to do everything that is present. I have to do everything that is present in the test and solve everything. So that will definitely hold you back. Essentially, ideally, what should happen every time you look at a set for the first 3-4 minutes, you read, you also make a few notes and then see, do you know the path forward? If you know the precise path forward and you can see that it can be solved under 10 odd minutes. Okay, I will pick this setup right now. If you can't see a path forward, or if you can see a path forward or see that this is more than 10 minutes, move on from that set at that time. Once you have gone through every set, let's say there was a test right now, I think some AMCAT 2417 or 2416, one of those tests, in which there was one moderate set which was easy enough to handle, and then there was an easy set, but it required a lot of time input. So in picking it up in the first round is not ideal. Leave it alone. Go through all other sets that are available, and within those sets, if you can find something actionable, if you can find something sensible, then it is fine. If you can't find it, come back to the hard work wala set, spend 20 minutes there. It is not a problem. See, what you're saying is sometimes sets end up taking a lot of time, or sometimes the order in which you are doing sets is not right. The order will only get muddled up if your decision making about, okay, even if I know a little bit about the set, let me rack my brains and try to solve it to the best of my ability in the first go itself. That should not happen. Usually, or at least in my own particular case, what happens is within the first 10 odd minutes, I have not marked a single answer, but at least by the end of 10 minutes, I'm either solving a set, I have identified which set to attempt, or I am, as in, I'm not marked an answer by then. I'm solving a set after having looked through everything, or I have identified something so simple that at the end of the 10 minutes, I'm usually done with the first set. So I can have two extremes. At the end of 10 minutes, having one entire set completely attempted, or at the end of 10 minutes, or even 12 minutes, or even 30 minutes, I have no questions attempted. The range of outcomes is wide, yet it does not
एक्चुअली मैटर टू मच कि भाई सवाल हो गए कि नहीं हो गए अभी तक, क्योंकि अपना गेम और एटलीस्ट द इंटेंट एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग अ टेस्ट इज सिंपल। मेरे को आसान सवाल उठा के कर देना है, तो वो जो लो हैंगिंग फ्रूट वाली बात रहती है ना, मेक श्योर दैट ऑल द इजी क्वेश्चंस और द एक्शनेबल डुएबल क्वेश्चंस दे नेवर गेट मिस्ड आउट ऑन। तो अभी जब तुम ये कहानी भी बोल रहे ना कि हम थोड़ा पैनिक कर जाते हैं और हम ये रहते हैं, ये थोड़ा सा वो वाली बात भी है। यू गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट वंस यू, मतलब तुम शुरुआत ही कर रहे कि DILR वाले सेक्शन के अंदर कि मेरे से नहीं होता है या मेरा फंस जाएगा या मेरा अटकेगा, इसी चक्कर में as soon as you find something even remotely familiar we latch on to it like ना ना ये हो सकता है मेरे से, तो ये कर ही लेते हैं क्योंकि बाकी सेट पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। You never make assumptions about the ease or difficulty of other sets. And then of course the judgment over time. Right now when you're saying you've done 400 LRDI sets and that is tremendous, wonderful. अब the mocks or the sectionals or whatever tests you're taking, उसके अंदर ना in your analysis time add an additional parameter of was my judgment about sets correct. You will realize, and in fact a lot of people realize their judgment about sets is based on ये किस टॉपिक का सेट है, वो किस टॉपिक का सेट है। अगर कहीं पे बार चार्ट दिख गया तो बार चार्ट में तो बहुत कैलकुलेशन होता है तो हम ये नहीं करेंगे, या ये तो गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट है, मेरे को तो गेम्स एंड टूर्नामेंट आता नहीं है तो हम गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं करेंगे। बट आफ्टर द टेस्ट यू रियलाइज नहीं नहीं ये उतना टफ था नहीं, ये सब किया जा सकता था। वर्सेस ये तो अरेंजमेंट का सेट है, ये तो बहुत आसान होता है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन 5-6 minutes into the solving of the set you realize भाई बहुत ज्यादा केस बनने वाले, yet because I have invested 5-6 minutes in it I will not choose to move away from it. That is poor decision making. Basically you have to get to a point where you are very very agnostic towards set solve हो रहा है कि नहीं। The only thing you would be caring for is अगर रेंज में है तो चलो तुरंत कर लेते हैं, अगर रेंज में नहीं है तो तुरंत कट भी लेते हैं। यू स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन अ सेट देन your brain telling you is good or it is factually good is a bigger problem than you worrying about मेरे से कितना हो रहा है क्या हो रहा है। साथ के साथ in all honesty अभी जैसे मॉक्स आ रहे हैं and I'm talking only of the big three, the IMS and the CL and the time, I am keeping an eye out on the sets that they're providing. अभी वाले सेट्स, अभी वाले मॉक्स ऐसे आ रहे हैं कि भाई कोई उसके अंदर अगर 2 सेट कर ले रहा है ना तो दुनिया पलट दे रहा है। तो आई डोंट नो इफ वी आर टारगेटिंग मोर देन 2 सेट्स राइट नाउ। अभी 2 सेट करना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वंडरफुल। सो इन केस यू आर हिटिंग दैट 2 सेट मार्क फिर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। Anyone who is getting upwards of 23-24 in the mocks, at least the ones that I have seen so far, and I've seen a fair few of them, कोई अगर 23-24 मार्क्स के ऊपर 8-9 सवाल नेट करेक्ट कोई कर रहा है, बहुत कर रहा है भाई। क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी मेरे को तो लगता है कैट इससे आसान आता है, बट देन अगेन अपने को पता नहीं कैट कैसा आएगा। सो instead of let's say judging the mock or the sectionals or whatever tests are coming, I would rather say ये देखना हम we are picking up the sets that we would pick up after the test in the same order of difficulty as we rated them within the test. The greater the number of tests or sectionals or mocks that you take, the more क्या पता है repeatable this exercise would be and your uh, working towards it हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या am I do I have preconceived notions about a difficulty of ease or a type of set that gets handled with more and more practice only. I hope I've answered to some extent. अगर है तो ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़ते। Next, hello sir, I'm working in a very small aquarium supplier. My company import molded aquariums and we sell distributors in Pan India. I'm guessing you are distributors. We have 15 people working together and I work as a salesperson where my job responsibility is to add up more distributors. Okay. See, if you're selling the product, you are a salesperson. If your job is to add more distributors, then you're sort of doing either HR का काम or you're doing business development का काम and handle existing customer as key account manager. अगर तुम अच्छा एक वैल्यू चेन की बात समझना, अगर तुम एंड यूजर जो है ना, एंड पर्सन जो है वो उसको बेच रहे तब तुम की एग्जिस्टिंग कस्टमर हैंडल कर रहे, वरना अगर तुम वैल्यू चेन में नेक्स्ट लाइन ऑफ पीपल कोई बेच रहे
कि भाई वो लोग आगे जाके और बेचेंगे, तो फिर तुम की अकाउंट मैनेजर, ठीक है चलेगा। माई कंपनी डोंट कट कट पीएफ सिंस लेस पीपल आर एसोसिएटेड। देख 15 के ऊपर स्टेट एसोसिएशन का ईपीएफ ईपीएफ कटने का लॉ आ जाता है, तो अगर 15 पीपल हैं एंड आई एम गेसिंग यू आर, ये कोई तुम्हारे चाचा चाचा दोस्ती यारी वाली कंपनी है, तो देख लेना क्या स्कीम है। मतलब आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, बट based on my conversation with one of my friends who runs a company, he told me 15 लोगों के ऊपर हो तो कुछ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह काटना पड़ता है, वरना स्टेट कमीशन लेबर लॉ वाले आके कुछ 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 उसका मतलब उस पे फाइन लगा था 15 लोगों के ऊपर है तो आई डोंट नो। माय कंपनी डोंट कट PF, so the name on my salary slip my senior gives me bank voucher of check deposited. This is not a salary slip. Bank voucher is not considered salary slip. Salary slip has to be मतलब देख बड़ी कंपनी है तो पीएफ एचआरए डियरनेस अलाउंस क्या 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 सब कुछ का सब हेडिंग्स रहता है। अगर छोटी कंपनी है तो कंपनी के लेटर हेड पे लिख के मिलना चाहिए कि इतना मिला है, और आपके बैंक अकाउंट में करस्पॉन्डिंगली अमाउंट जमा दिखना चाहिए। बैंक वाउचर इज नॉट कंसिडर्ड सैलरी स्लिप। अच्छा, as my salary slip with signature on it that I have paid for that particular work. तुम देखो this is very very problematic, क्योंकि if you are getting a salary slip or a bank voucher claiming that you've paid for that particular work, it means you are there on a project basis. This is not a full time employment. तो ये बड़ी दिक्कत की बात है भाई, ये नहीं चलेगा। Will this be considered as work experience? If you have a letter of joining, if you have an experience letter stating TF deduction is not a problem. TF डिडक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम। छोटी कंपनी है, TF ना भी हो, उनके लेटर हेड पे लिखा हुआ हो तुम्हारी सैलरी कितनी है, सब कुछ साइन वाइन हो, कंपनी का स्टैंप हो, कंपनी का सील वील हो, सब कुछ हो, चल जाता है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। PF इज नॉट अ फैक्टर। माई बिगर कंसर्न इज इफ यू हैव सिंपली अ बैंक वाउचर एज प्रूफ ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड आइडियल, क्योंकि ये अब ऐसा हो गया कि भाई दिहाड़ी वाला काम नहीं होता कि हम ईंटें उठा रहे तो दिन के आखिरी में ठेकेदार मेरे को पैसे पकड़ा रहा है। दैट इज नॉट सैलरी स्लिप, क्योंकि सैलरी स्लिप के लिए आइदर यू मतलब कंपनी की तरफ से तुम्हारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। कंपनीज अवॉइड दिस, क्योंकि फिर वंस दे हायर यू एज ऑफिशियल एम्प्लॉइज, वही जो हम बता रहे थे हमारे दोस्त के साथ, तो स्कैम स्कैम क्या मतलब भाई को फाइन भरना पड़ा था। तो यही रहता है, इफ दे शो यू एज एन ऑफिशियल एम्प्लॉय, इफ देयर काउंट ऑफ एम्प्लॉय गोस, जहां तक मेरे को याद है 15 की ही लिमिट थी, अगर 15 के ऊपर है तो फिर तेरी सैलरी से PF डिडक्शन होगा और कंपनी को भी कुछ उतना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो कॉस्ट फॉर द कंपनी गोज अप। इसके चक्कर में छोटी कंपनी दिखाना ही नहीं चाहते मेरे पास इतने एम्प्लॉय है उतने एम्प्लॉय है। तो आई एम नॉट वेरी लीगली वेल वर्स्ड इन दिस, बट I am absolutely certain bank vouchers would not be considered as salary slip. You would need it on the letterhead of the company कि इतनी सैलरी मिलती है, and correspondingly आपके बैंक अकाउंट में उस टाइम पे कंपनी से डायरेक्ट पैसा जमा होना चाहिए। ओके, बाकी देख लेना। नेक्स्ट, I have not covered the entire syllabus, but I'm struggling to be fast enough to do the questions I'm able to do after the mock. Also taking a lot of time while going to solve DILR sets. Any help would be appreciated. I think the solution to your problem is present within the question itself. You have not covered the entire syllabus, so ideally first ensure that you've covered sufficient amount of the syllabus, because if you've not covered the entire syllabus, let's say you've only done arithmetic so far and you've started taking mocks, that is counterproductive. Dusra, if you have done significant amount of the portion, let's say तुम आपने LRDI के अंदर भी 300-400 सेट्स मार दिए हैं, और फिर अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री ये 3 टॉपिक कर लिया, और अंग्रेजी के अंदर 150-200 RC मार लिया, एंड देन यू आर टेकिंग मार्क्स, दैट इज फाइन। Your next concern is I'm struggling to be fast enough to do the questions I'm able to do after the mock. See, speed is a natural consequence of confidence. मतलब देखिए, बैक इन द डे व्हेन वी वर लिटिल, जब हम लोग टेबल्स पे याद करते थे, 7 into 8 कोई पूछता था तो वी वेंट 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जा 7 7 जा 7 8 जा, फिर जाके 56 आता था दिमाग में। लेकिन अब we do 7 into 8 is 56 directly. Is it because we have learned something special about 7 into 8, or is it because we have solved so many questions where 7 into 8 was applied that
we have become reasonably sure that the answer is 56 in such a case. So deliberately chasing after speed is absolutely counterproductive. Is absolutely counterproductive for the simple reason speed is not something you can consciously impact. आप जितना सॉल्व करेंगे और जितने सवालों के अंदर समझेंगे, अभी आई डोंट नो हाउ योर एनालिसिस इज आल्सो टेकिंग प्लेस, क्योंकि एनालिसिस करते वक्त say when you're attempting, when you're doing the analysis part of it, I'm guessing this is more to do with QA, क्योंकि फास्ट इनफ आदमी खोज रहा होता है QA के अंदर ही. तो when you're doing the analysis, your first go has to be, let me get to the answer, even if it is the longest and most painful path to the answer. That is absolutely fun. तो एब्सोल्युटली सीधे सीधे ये काम करना, समय लगा के करो. वंस दैट इज डन, उसके बाद तुम शॉर्टर तरीके देखोगे ना, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट एंड दे विल हिट यू मोर. ऐसा मत करना एनालिसिस टाइम में कि हम सीधा सीधा वो खोल के देख लेंगे, हम सीधा सीधा पहले सोल्यूशन देख लेते हैं. सोल्यूशन फिर ना होगा कि you'll be able to appreciate wonderful solutions, you'll never be able to initiate those wonderful solutions. The speed that you're chasing after will be a natural consequence of you having more confidence in your abilities, but it will also be impacted by you having gone through the pain. You'll be able to understand हाँ इसको कैसे ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है. Similarly, if it is taking you a lot of time while solving DILR sets, it is probably down to the fact that I don't know how much practice has been done. So I'm assuming you are at a level where you've done, let's say, 200 plus sets. बहुत तुमने DILR के अंदर अच्छे से मारे हुए हैं. तो अब अगर हमें समय लग रहा है, तो कुछ सेट्स में समय लगता है. There are sets that will take you 15 plus minutes. There are sets that will take you 18 minutes. There are sets that will take you 25 minutes. Ideally, anything upwards of 25 minutes should not be a part of a mock or a sectional or whatever the set may be. But then मोर देन कितना समय लगता है, अगर इनिशियल पीरियड है और समय ज्यादा लग रहा है तो फिर ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट डिग्री ऑफ नॉट कवरिंग द एंटायर सिलेबस इज डन. So what degree of not covering of entire syllabus में, if you've done enough number of sets, लेकिन आखिरी के कुछ टॉपिक रहते हैं, let's say conditional statement, truth tables, ऐसा कुछ बचा हुआ है और तब समय लग रहा है, तो ठीक है, वो सेट का टैलेंट हो सकता है कि उस सेट में समय लगना चाहिए. उसके अलावा लेट्स से हम धीरे धीरे हर चीज ही लिखित लिखित करके सॉल्व करते हैं, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो दैट स्टेम्स फ्रॉम लैक ऑफ फेथ इन योर ओन एबिलिटीज, कि हम जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, इज दैट रीजनेबल और नॉट रीजनेबल. तो देखिएगा, एनी हेल्प मतलब all I can say is, if I had to be absolutely certain of one thing that will work is solve more, practice more, and solve, मतलब कॉन्शियस होके सॉल्व करना. डोंट बी क्रेजी आफ्टर द फैक्ट कि मेरे को एक दिन में 100 क्वांट के सवाल कर रहे. दिन के 40 सवाल करो, दिन के 20 सवाल करो, लेकिन ऐसे करो कि उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे सब समझ में आए. यू कैन रीड अ क्वेश्चन विदाउट लिफ्टिंग द पेन. यू कैन सी, अच्छा ये स्टेप करना होगा. द मैथ्स ऑफ इट कम्स लेटर. मोर ऑफन देन नॉट, सी ये समझिएगा, मोस्ट लोगों के साथ ना चैलेंज ये नहीं है कि उनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता. इट इज मोर ऑफन देन नॉट पीपल गेट स्टक एट द लैंग्वेज पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन चाहता क्या है मेरे से करवाना. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, लोग शुरू कर देते हैं, वो t is equal to this, s is equal to this, d is equal to this. More than that, you need to create a mental map beforehand कि अच्छा ये स्टेप करने, इस रास्ते जाना है मेरे को. Once you identify that रास्ता, the subsequent processing would be faster. तो देख लीजिएगा if that works for you. How to use your QA 1400 plus questions and DILR 200 sets effectively. अच्छा, QA 1400 प्लस से ज्यादा ही हो गए थे क्योंकि लास्ट ईयर बाइट साइट्स भी डाल दिए थे. DILR भी 200 से ज्यादा ही हो गए थे क्योंकि प्राइम भी डाल दिए थे. बट ठीक है, माई चैनल इज अ प्रैक्टिस चैनल. माई चैनल इज एब्सोल्युटली नॉट फॉर समबडी जिसने बेसिक्स नहीं पढ़ा है, जिसको टॉपिक्स के बारे में ज्ञान नहीं है. वो आके अगर ये सवाल वगैरह करने लग जाएंगे ना, उनकी जिंदगी में दुख मच जाएगा. As the description of the channel says, this is created with the intent of you having practice. Once you've covered these topics on your own or from your coaching or wherever, जहाँ पे तुमने थ्योरी पढ़ ली है, उसके बाद आओ मस्त QA के अंदर भी काम क्या करना है, कैसे करना है, मस्त वीडियो चलाना, मतलब ओपन अ वीडियो, उसके अंदर सवाल देखना, खट 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 अपनी तरफ से सॉल्व करना. Once that is done, go to the end of the video. If the answer matches, move on.
उससे ज्यादा सरदर्दी मत लेना. You don't need to watch through every video in entirety for you to understand what exactly is happening there. ये QA के इंडिविजुअल वीडियो, जो प्रैक्टिस प्लेलिस्ट जो था DILR सेट्स के अंदर भी, शुरुआत at the beginning of the video देखना, सीधा आखिरी में जाना. If the answers marked would be available there, if all the answers marked are same as yours, ठीक है, आगे बढ़ जाना. If at all you've taken more than the proportionate time, usually मेरा टाइम DILR सेट का या QA क्वेश्चन का जितना भी टाइम लगा हुआ ना मेरे को क्वेश्चन में, उससे अगर तुम 1.5 टाइम्स तक जा रहे, let's say I made a DILR set का video for 20 minutes and you solved that DILR set in 30 minutes, तब फिर it's not worthwhile for you कि नहीं हम देखते हैं क्या किया है कैसा किया. बट इफ इट इज टेकिंग मोर देन 30 मिनट्स, 1.5 से भी ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हें, क्योंकि हम ऑलरेडी सेट के अंदर, देयर आर सेट्स जिसके अंदर हमने insane amount of slow processing करी है. So anything lower than 30 minutes, I'm saying you don't need to watch through the solution. Sometimes your solution may not necessarily match, क्योंकि हमने भी गलतियां कर रखी हैं. I am not a perfect person, मतलब perfect solving them जैसे होती भी नहीं. So there are questions जिसके अंदर हमने अल्ट्रा बेवकूफी वाली गलतियां भी करी हुई हैं. So in case the answer doesn't match, तो देख लेना थोड़ा सा ठीक, अगर वहां पे हो सके तो, वरना सीधा बढ़ जाना. Are those cat centered or OMET centered? I have absolutely no idea what is cat centered or OMET centered. They are topic centered. मतलब DILR के अंदर DILR की बातें और अरिथमेटिक में अरिथमेटिक की बातें. एक बहुत ही अकलमंद आदमी ने कहा था कि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट स्नैप का एग्जाम हो या कैट का एग्जाम हो बदल नहीं जाते. दे रिमेन एब्सोल्युटली सेम. तो ठीक है, तो they are cat centered or OMET centered. There are easy, I'll reframe the question. There are absolutely easy questions in the playlist also. There are absolutely insane questions in the playlist also. You're not expected to solve every question in order to reach proficiency. You're expected to solve those questions that you think you can solve straight away. जो सवाल तुमने उठा लिए उसमें से वो ढंग से हो जाने चाहिए. Even if you end up solving, मतलब DILR के 200 सेट में से you solve 120 yourself and you watch the solution for the rest 80, you are at a much better place than those who will keep on hunting for perfect material क्या एग्जिस्ट करता है. ये 200 सेट्स करने के बाद आप प्रणव पंत सर के एप्टीट्यूड जैब वाले चैनल पे जाके भी सेट्स देख सकते हैं. वहां पे उन्होंने मस्त मस्त सेट डाले हुए हैं, वहां से भी काम चला सकते हैं. सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, बट देन अगेन यही समझना, आई डोंट नो सर के चैनल पे क्या है, लेकिन इफ योर DILR इज ऑल ओवर द प्लेस, तुम्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है. लेट्स से हम तुम्हें बोले गेम्स एंड टूर्नामेंट में होम एंड अवे रूल्स के अंदर मैचेस चल रहे हैं और तुम्हें नहीं पता चलता होम एंड अवे रूल्स क्या है, तो फिर भाई ये DILR सेट्स करने में इतना बहुत दिक्कत रहेगी. क्योंकि एब्सोल्यूट बेसिक फंडामेंटल, या 2 places away and there are 2 persons between different individuals, you need to know the difference between these statements. उतना पता होना चाहिए, उसके बाद ये सेट्स करने हो चलेगा. Okay, next, how to go from consistently scoring 95 to 99% in VARC. I'm guessing you mean percentile. परसेंट तो जान निकल जाएगी भाई. 95 to 99 percentile चल सकता है. Is VARC something that can be relied on like quant, where someone can be sure of a good performance in a relatively difficult test? See, how do I put it? You can never be certain of an individual question in VARC, but you can be certain overall for the VARC section. VARC section के अंदर देखना, there has to be an acceptance of collateral damage. मतलब somebody who is chasing after 100% accuracy in VA or somebody who is chasing after 100% accuracy in RC, क्योंकि हम एक एक सवाल पटक के ठीक कर देंगे, that is absolutely bonkers. हो ही नहीं सकता, or at least it is not worthwhile. It is not worthwhile. कि you should be in a place कि भाई you are reasonably confident of your answers in most cases. But when I say reasonably confident, it is not मेरे को B अच्छा लग रहा है इसलिए B. You should have reasons for why A, C and D are wrong and therefore B should be correct. Far too often people in their application of the elimination technique of RCs end up doing selection का inverse as elimination. मतलब B मेरे को अच्छा लग रहा है इसीलिए A गलत है, इसीलिए C गलत है, इसीलिए D गलत है. That is not the reasoning that you should be taking. It should be A versus B का ऑप्शन हमने उठाया,
इन दोनों में से ए बुरा लग रहा है तो बी सर्वाइव्स। अब हमने बी वर्सेस सी का गेम देखा, इसमें से सी बुरा लग रहा है तो सी गोज अवे। अब बी वर्सेस डी देख रहे हैं, इसमें डी इज वर्स देन बी रिमेन्स एंड देयरफॉर बी शुड बी योर आंसर। इट शुडंट बी एज इफ ए तो गंदा है तो हटा देते हैं, बी तो गंदा है तो हटा देते हैं, सी तो गंदा है तो हटा देते हैं और डी तो गंदा है तो हटा देते हैं। उस far very often, especially for somebody in the 95 to 99 percentile range or even 90 range तक, वो वाली कहानी रहती है ना, हम जब ऑप्शन एलिमिनेट करें तो सारे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज देन व्हाट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इज VARC के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट ऑप्शन दैट हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन आइडियल आंसर। That was never the objective of the VARC section. The objective was identify the best option out of the four. And therefore, in a death match between two options, if B goes away or A goes away, one of the two go away, what you have to be mindful of, इन दोनों में से better कौन सा है, rather than इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी, क्योंकि कमी ढूंढने जाओगे, we as human beings, we may not necessarily be smart enough to identify what is right. बट कहीं भी गलती दिखे, उंगली दिखाना तो मैं मस्त आता है ना, तो हम लोग मस्त ये काम कर सकते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सो इंस्टेड ऑफ, मतलब ये थोड़ा एलिमिनेशन में इसका ध्यान रखना, यू आर नॉट सीकिंग द बेस्ट आंसर चॉइस एज इन द परफेक्ट आंसर चॉइस, यू आर चूजिंग द बेस्ट आंसर चॉइस आउट ऑफ द लॉट दैट इज गिवन टू अस। एंड देन question number 15 within the test may or may not be correct. You cannot rely on that. In quant, after you solved, you are fairly confident कि हो ही जाएगा. But in VARC, you'll never be certain कि question number 15 मेरा पक्का सही होगा कि नहीं. But with extended practice, with a lot of reading, with a lot of solving, with a lot of work around it, you will get to a point where you can be reasonably confident. अगर हमने 16 RC के सवाल मारे तो मेरे 12 प्लस ठीक हो जाएंगे. That level of confidence can be achieved, and once you reach that level of confidence, फिर कुछ भी चल जाएगा. As in, and that is where my sweet spot of VARC also lies. जैसे हमने CAT 2021 दिया था, RC की बात करें, because that is the section I'm reasonably confident in. RC के अंदर in the previous year CAT, out of 16 RC questions, I got 15 right, 1 wrong. ठीक है, बढ़िया चलेगा. इस साल के RC में out of 16 RC questions, I got 11 right and 5 wrong. तब भी चलेगा, इतना कोई लोड की बात नहीं है. The test got absolutely difficult. The test got absolutely difficult. क्योंकि इसमें समझिएगा, और फिर BA के अंदर मेरा relatively same performance था. I don't remember last year क्या था, इसमें क्या था. मेरे को RC के अपने पता है, क्योंकि that is a score I absolutely care for. अब यहाँ पे और यहाँ पे सेकेंड ईयर में मेरा अंग्रेजी का ज्यादा परसेंटाइल रहा था, क्योंकि क्या कहते हैं, पेपर डिफिकल्ट आ गया था. सो आई कुडंट बी सर्टेन ऑफ गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस राइट इन VARC, बट बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड significantly a lot in VARC, and I have क्या बताएं, उमर के साथ हमने अपना VARC एलिमिनेशन का आइडियाज वगैरह, इंफॉर्मेशन कैरिंग, ये सब इतना अच्छा कर लिया थोड़ा सा कि मेरे को पता था अगर हम हिल रहे हैं तो दुनिया भी हिली रही होगी, ठीक ठाक ही चल जाता है. सो VARC is something you can rely upon, absolutely, but you cannot rely upon every individual question. It will be an entire section that you can be reliant कि भाई ये तो मेरा ठीक जाएगा. Okay, next. I have 2 questions. One, I'm still in theory part completion phase and not in test taking phase. Not a problem. I'm interested to know how test taking strategies. I'm interested to know the test taking strategy, as this will be my first CAT attempt. How can I get maximum advantage of Foxbox advantage? This is related to point 2. Will watching the recording be beneficial if I not intend to attend live classes of Foxbox advantage? I would. कैसे समझाएं? This necessitates me to say कि ना Foxbox advantage बहुत awesome है, और फिर मेरे को उतना मन नहीं करेगा. I'll tell you this. पहली चीज अभी ध्यान दीजिएगा, आप अपना theory part complete कर लीजिए, and hopefully significant part of your theory is done. You're not waiting for 100% completion of theory, उसके बाद ही हम टेस्ट लेंगे. Hopefully you're not going down that rabbit hole. So if your significant part of theory is done, you can start taking tests. Test taking strategies. When I say test taking strategies, I'm simply talking of removing the emotion factor out of test taking. I'm talking of when, matlab, you have to train your brain to move away from a question. As good students, especially people who are trying to come up in life,
मतलब पहले हमारी जिंदगी में बहुत दुख हुआ था, हमें आज तक मौका नहीं मिला है अपनी अकलमंदी दुनिया को दिखाने का, लेकिन अब हम कैट फोड़ देंगे तो चलेगा. सो दीज पीपल हु आर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट टू देमसेल्व्स एंड टू द पीपल अराउंड देम, उनके साथ दे हैव अ चिप ऑन द शोल्डर, और उनको लगता है कि भाई अगर सवाल सामने आए तो मेरे को करना ही करना है, despite the fact that less than 50% of the paper will get you 99 percentile. So moving away from a question, getting the mindset of कि यार अगर सवाल मेरे को छोड़ना भी पड़ा है ना तो कोई बात नहीं, हम छोड़ सकते हैं सवाल. Not being able to solve a question or moving on from a question despite you having an inkling of an idea what needs to be done, ये ट्रेनिंग की बात हम ज्यादा कर रहे हैं. टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी तो हम फिर भी क्या, there are more habits that would be talked of. And then eventually whether you start with VA, whether you start with RC, whether you do DI first or you do LR first, or whether you start with matlab you solve all the quant questions in one go, or you solve quant questions in cycles, every person will have their own individual take on the issue, and no take is wrong. It boils down to you should have taken enough tests for you to understand कौन सा मेरे को करना चाहिए, कौन सा मेरे को नहीं करना. What works for you, essentially यही समझिएगा strategy wise. The strategy that worked for, let's say, Virender Sehwag, I don't know, I'm old in this regard कि cricket मेरे references में player पुराने रहेंगे. The strategy that worked for Virender Sehwag कि पहली बॉल से हम मार सकते हैं, did not work for Rahul Dravid क्योंकि वो पहली बॉल से नहीं मार सकता था. So who was a better batsman? They were different batsmen and they approached the game differently, and both of them were brilliant in their own individual regard. So there is no one way कि ऐसे ही टेस्ट देना चाहिए. There are certain good practices. Yes, अच्छा सहवाग हो या ये हो, hand eye coordination was important for either batsman. Making sure that they were not getting LBW was important for either batsman. Finding the gaps was important for either batsman. Those aspects when it comes to test taking, कि भाई सवाल छोड़ के बढ़ जाना है, नहीं पता चल रहा तो लोड नहीं लेना उसके साथ, और एक सेक्शन खत्म हुआ तो दूसरे सेक्शन की स्टार्ट में उसका हैंगओवर नहीं रहना चाहिए. Those are the things that would be emphasized more upon in Foxmox advantage classes. So see if those are relevant for you. अगर बात सीधे समझ में आ जाती तो अच्छी बात है. Will watching the recording be beneficial? I think they should be beneficial, but तुम्हारी इच्छा है, देख लेना. I'm uh, I don't want to talk more on the Foxmox advantage per se. कोर्स अच्छा है, उसके बारे में कुछ पूछना हो तो देख लो. ठीक है, नेक्स्ट. सर ड्यूरिंग योर टाइम्स आपने सेल्फ प्रिपेयर किया था, सो एट दैट टाइम आई एम श्योर इंटरनेट एंड यूट्यूब नहीं होगा. ओके, नाथ होगा. सो प्लीज शेयर इनसाइट्स अबाउट योर प्रेप. हाउ डिड यू इंक्रीज योर मॉक स्कोर्स? ठीक है, तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मतलब सामने वाला मेरे को काफी बूढ़ा समझ रहा है, एंड आई एम बूढ़ा. आई हैव I will hit the big 35 this year. I will become 35 this year. हम इतने बूढ़े हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इंटरनेट नहीं था भाई हमारे जमाने में. हमारे जमाने का इंटरनेट थोड़ा अलग था. हमारे जमाने के इंटरनेट थोड़ा सपोर्टिव था, इतना टॉक्सिक नहीं था. एंड स्पेशली फॉर एमबीए एस्पिरेंट्स वी हैड अ वेबसाइट बाय द नेम ऑफ पागल गाई, जिसके ऊपर बहुत ही सपोर्टिव कम्युनिटी थी. सो हमारी कैट की पढ़ाई, यूट्यूब नहीं था हमारे जमाने में, यूट्यूब और कैट का कोई लेन देन नहीं था. हमारे जमाने पागल गाई से चलता था काम. एंड मोस्ट ऑफ आवर स्टडी वाज वेरी टेक्सचुअल, whereas you have a lot of video input available. Most of our input was textual, and I had a bunch of 3 other friends who were enrolled in the same institute that I was. हम लोग चारों लोगों के पास आइडिया का सिम हुआ करता था. रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक मैसेजिंग फ्री होती थी. हम लोग एक एक सवाल को 2-2 दिन लग जाए, 3-3 दिन लग जाए तो भी चलता था, क्योंकि और क्या था ही क्या करते हो जीवन में. एंड वी नेवर एवर सॉर्ट सॉल्यूशंस फ्रॉम ईच अदर. वी ऑलवेज सॉर्ट, अच्छा इस सवाल के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. एंड देन वी ट्राई टू वेड आवर पाथ फॉरवर्ड. यहाँ से ऐसे पहुंच सकते हैं, वहां से ऐसे पहुंच सकते हैं. एंड देन दैट इज हाउ इट वर्कड आउट. मतलब ये था हाउ आई इंक्रीज माई मॉक स्कोर्स. आई हैव अ वेरी वियर्ड स्टोरी फॉर यू. द थर्ड और द फोर्थ मॉक दैट आई टेकन है, उस जमाने में हमारे मॉक देने के लिए भी ना, मतलब आई हैड टाइम का मॉक, और हम लोग को एक स्कूल जाना पड़ता था बैठ के पेन पेपर. आई वाज द लास्ट पेन पेपर कैट टेकर. तो स्कूल में बैठ के मॉक देना होता था. द थर्ड और द फोर्थ मॉक ऑफ द सीजन जो था टाइम का, आई हैड स्कोर्ड सम
रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 4, 99.97 ऐसा कुछ था। और फिर बाय द टाइम, एंड दिस वाज सम टाइम इन जुलाई, और फिर जब हम उसमें थे सम टाइम एट द एंड ऑफ सितंबर, क्योंकि हमारा तो अक्टूबर में ही कैट हो जाता था, एट द एंड ऑफ सितंबर हमने एक टाइम का मॉक दिया था जिसमें आए थे मेरे पूरे 66.54% आई, ऐसा कुछ आया था। तो हमने मॉक देना ही बंद कर दिया, उसके बाद बहुत हुआ ये बेकार हो गया, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो आई डिड नॉट रियली इंक्रीज माई मॉक स्कोर्स वेंट डाउन, दिस ऑफ कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट साइकिल। इसके बाद तो सेकंड थर्ड साइकिल से तो आई स्टार्टेड ऑफ एट अ मच बेटर प्लेस एंड एंडेड एट अ मच बेटर प्लेस, बट I was never really concerned about my mock scores. I was never really concerned about my test में मेरा नंबर ठीक आ रहा है कि नहीं. What I was genuinely concerned about was during the course of the test, am I picking up the right questions that are within my range? क्योंकि as a candidate मेरे पास काफी limitations थी. मतलब हमने it was only after I did my MBA and came out of it, तब हमने जाके पीएनसी एज अ टॉपिक के बारे में एक्सटेंसिव रिसर्च एंड पढ़ाई करी। उससे पहले एज अ कैंडिडेट तो हम मस्त पीएनसी छोड़ के भागते थे, हम नहीं अटेम्प्ट कर रहे भाई पीएनसी, क्योंकि बट देन हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे। पीएनसी का मतलब था कि अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री और अलजेब्रा के अंदर हम बेयरली एक या दो सवाल छोड़ेंगे, बाकी सब हम निपटा देंगे, और तब हम पीएनसी छोड़ देते। ये वाली हालत नहीं थी कि हम इधर एक भी सवाल, मतलब हो पोच के रखा था। पीएनसी हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे। आफ्टर आई केम आउट एंड डिड माय ओन स्टडीज ऑफ पीएनसी, तब रियलाइज हुआ नहीं भाई पीएनसी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, हम फालतू में उस पर सरदर्दी ले रहे थे। सो आई हैव लॉट्स ऑफ क्या बताएं इंडिविजुअल दुख about topics that I realized later on were more constructs of my mind rather than the topics themselves being absolutely weird. But ठीक है. Next question: are the QA questions posted by you 2 years back relevant for CAT 2023 also? This question seems a little off to me, because if arithmetic hasn't changed in that time, the questions are still relevant. If number system hasn't changed in that time, the questions are still relevant. Understand, the concepts don't change. Concepts absolutely don't change. So the questions are still relevant. In fact, unlike most other people, I'm not going to go claim, देखो मेरे इस लिस्ट से ये वाला सवाल आया कैट के अंदर. If somebody had the time and the willingness to do it, तो तुम्हें मेरे लिस्ट से बहुत सारे सवाल भी मिल जाएंगे. But then this, in all honesty, this list is not mine. These are questions from past year mocks itself. And those mocks test providers are repeating those questions in their own mock tests. So I don't know if the relevance question still stands, but ठीक है. तुम्हें अच्छे लग रहे, if you feel they are benefiting you तो करना, if you feel they're not benefiting you तो मत करना. Nothing more, nothing less. Next, I am a repeater and looking for some clarity in the VRC section. I have given 400 plus RCs during this cycle outside box and sectional, and the pattern I noted is I can comprehend the passages fairly, but usually get stuck in the options. I take longer time to eliminate and reach the final answer. Still, sometimes the accuracy is good. Sometimes it's not even up to the mark. I'm experimenting in sectionals by altering the number of attempts. But for now, facing a muddling situation about the same, I don't know exactly what exactly shall I ask about, attempts or accuracy, but can you please provide your view so that I can work on it in the right direction? I think the initial earlier discussion about the option elimination idea, A versus B and B versus C and C versus D, would be something that is good for you. And apart from that, also know this, ki bhai, sometimes the accuracy is good, sometimes it's not even up to the mark. पता है, when you're attempting the test, एक मस्त काम करना, when you're marking an answer, अपने साथ ना यूजुअली लोग जब DILR या QA का सेक्शन आता है तभी एक पेन और पेपर लेके बैठते हैं. हम बोल रहे हैं मोर देन दैट, अपने साथ अंग्रेजी के सेक्शन में अटेम्प्ट करते वक्त, RCs करते वक्त पेन पेपर लेके बैठना, उस पर क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 16 पहले से ही लिख लेना. एंड देन whatever option you are marking and the degree of confidence that you have, what degree of confidence, let's say you're 70% sure, you're 80% sure, you're 20% sure, you're 40% sure, उसके हिसाब से मार्क कर लेना. एंड देन सी इन ऑल क्वेश्चंस दैट यू वर 70% और हायर श्योर, उसके अंदर कितने गलत हुए, दैट इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेदर यू आर एक्यूरेट और नॉट. क्योंकि यूजुअली होता क्या है इंग्लिश के अंदर ना, you never know whether you're right or wrong until you marked the answer. The people tend to over attempt, अपनी attempt जितनी औकात है या जितना समझ में आ रहा है उससे ज्यादा ही attempt मार देते हैं.
So if within the options you are unable to discern a difference, मार दो और उसके साथ साथ ना रिकॉर्ड करते चलो. Once you have this physical record present, this will help you in stopping you from attempting questions that you are not absolutely certain of or you are not extremely confident of. तो उससे you will have a better idea of तुम्हारा जो गलती हो रहा है. Let's say when you say accuracy is bad, if in a test in which the VRC section is insanely difficult and you could ideally, as in getting 20-24 marks would land you 99 percentile in such a test, and such tests exists. In fact, such tests exist. अलग ही कहानी चल रही है आजकल. So let's say 25 marks पे 99 percentile टाइप बन रहा है. अब उस टेस्ट के अंदर you've done 2 RC passages in entirety and you've gotten 1 VA question right. तुम पार कर गए थे 99 percentile, but नहीं, because you have it in your mind, नहीं मेरे को 4 के 4 RCs करनी है, मेरे को VA के सारे सवाल करनी है, या मेरे को 3 RCs करनी है. वहां पे having a preconceived notion of how many sets or how many questions have to be attempted, वो छोड़ देना. साथ ही साथ engage in the exercise of how confident are you about answers and the questions that in which you are confident, उसके अंदर accuracy ऊपर जा रही है नीचे जा रही है. That would give you a fairer idea of whether your comprehension is actually correct or your comprehension is, as in you have a क्या होता है misplaced sense of confidence about the comprehension that you have. And this is true for everyone, not just this person who is repeating. This is true for everyone. Your accuracy in the VARC section especially, quant और DILR में तो हम तभी मारते हैं जब हम भरोसे पे रहते हैं. जो अंधाधुंध मारते हैं उनको पहले से पता है हम अंधाधुंध मार रहे हैं. VARC के अंदर keeping track of what you were actually confident of versus what you got right. क्योंकि अब ये भी देखना, the questions that you were let's say 40% confident in and got right, you should not take that into consideration while checking your accuracy, क्योंकि वो ना किस्मत से बैठा है. The question that you were absolutely confident in, and absolutely confidence is 70% and higher वाला confidence. There is no precise scale. यहाँ पे तुम्हारे खुद की confidence. You can break it down as very sure, sure, not sure. इस 3 grouping में भी डाल के देख सकते हैं, या whatever. If you want to have a numeric scale, you can use a numeric scale as well. But the questions in which you think you're right and you don't get right, वहां से तुम्हारी accuracy का ज्यादा अच्छा पता चलेगा कि अपने को आता है कि नहीं आता है. And that will also help you scale back on all the unnecessary risk one tends to take when it comes to the VRC section. But इसके अंदर एक potential flaw यही रहता है, ऐसा मत करना, let not this paper become the center of your universe at the time of attempting the paper. ये नहीं होना चाहिए कि भाई साहब हम एक चीज के पीछे पागल हो रहे हैं कि भाई ये मतलब द पेपर के ऊपर ध्यान नहीं, पैसेज के ऊपर ध्यान नहीं, आखिरी में बस रिकॉर्ड करते चलना इस क्वेश्चन पे हम कितने कॉन्फिडेंट थे कितना कॉन्फिडेंट नहीं. Okay, will the DILR sets in the mocks and sectionals be original new? Few other providers simply use sets from other coaching institute mocks. Can this be clarified for QA questions too? I don't know if you've looked at the tests that are present as trials. If you have looked at the tests, maybe that should answer your question. There will be a few similarities, there will be a few overlaps, because the other providers and me myself are going to use past year CAT के papers as guiding light for a few sets. अब past year CAT का पेपर में अगर हमारा ओवरलैप बैठ रहा है तो बैठ रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन apart from that, there will be new questions in the sectionals and mocks. Worst case में I would say ट्रायल वाला पेपर दे के देख लीजिए, तो उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, और whether the sets are original or not. Okay. I don't have a fresh NCOBC certificate. I will apply for it, but if I'm not able to get it within the last date of the registration, what should I do? This time there is no option of giving an undertaking. I have absolutely no idea of this particular piece of information. अगर NCOBC certificate डालने का अभी टाइम नहीं है, तो September 13 तक हमारे पास है ना कैट का डेडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन. तो कोशिश करेंगे तब तक हम जमा कर लें, वी गेट दैट. और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर जो पुराना वाला है अभी उससे काम चला लेंगे और फिर आगे जाके देखेंगे क्या होगा. बट देन आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन, बिकॉज दिस कैन ओनली बी आंसर्ड बाय कैट हेल्पलाइन. ये हम तो नहीं बता पाएंगे भाई, तो कैट हेल्पलाइन वालों को फोन कीजिए, वो बता देंगे. ओके
Next. Sir, there have been instances where students with 99.99 plus percentiles have been rejected from IMA interviews despite having a decent profile, 998 and 996. What could be the factors that one decide one selection at A, especially given that some of my juniors with far worse profiles and percentiles have made it to A? For context, I have a 996 profile plus 24-month work ex and had 99.86 in CAT 22, but could not clear any interviews. There is a whole new world that we can discuss about this. समझिए, percentiles, contrary to popular belief, is not an admission factor. Percentile is a qualifying factor. अगर आपकी 3 percentile आ गई तो आप इंटरव्यू रूम में जा सकते। और IMA स्पेशली का समझिएगा, IMA के पास जो भी बच्चा जाता है, there is barely any difference in profile. You have 996 and 24 months of work ex, सब कुछ अच्छा है. Maybe on the graduation parameter you wouldn't score as much as others, but the deciding factor, उसका जब आप breakdown भी देखेंगे admission का, the deciding factor would be the interview. और interview के दौरान अहमदाबाद वाले people, I have my own painful experience there. अहमदाबाद वाले people are not really looking for तुम कितनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेते. In fact, you would meet a lot of people who've gone to Ahmedabad who would not necessarily be extremely fluent at speaking. Yet, all those people, when you talk to them, they will have a story to share. They will be extremely driven as to what they want to do in life. They will have a decent goal that they're working towards. And the decent goal cannot be, I want to be an investment banking analyst. इतना बोल के रुक भी जाएंगे. Let's say if you say investment banking analyst, it would be follow-up question. अच्छा, investment banking वाले करते क्या है? What sort of companies are you targeting? If you मतलब let's say CDS क्या होता है, GDR क्या होता है, इस सब के बारे में बात करने की क्षमता होनी चाहिए. See, the fact that you made it to Ahmedabad ka interview, the fact that is to your credit, that is wonderful. You got a very, very good percentile, 99.86. अभी आधी जनता जो ये वीडियो देख रही होगी, वो अपना एक हाथ की उंगलियां काटने को तैयार रहेगी, इतनी परसेंटाइल दे दो मेरे को CAT 23 में. So you've done well there. अब इसके बाद what exactly happened in your interview phase, I don't know. But then it is not necessary you had a poor interview. The fact that you could not clear any interviews is a big red flag. But Ahmedabad mein, it is not necessary you had a poor interview. Because Ahmedabad mein, given the competition is so immense, it could very well be that others had a better interview than you, despite, let's say you score 84 marks out of 100 in the Ahmedabad interview. But बाकी सारों ने 92 मार दिया. You're still last. वो वाली हालत आ रही है. ऐसा नहीं है तुमने खराब किया होगा. And then let's say 24 months of work ex. Just because you have 24 months of work ex, that does not translate into कि तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे. They also take into account quality of work ex. As in when they ask you questions about things, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई in the, let's say one of the most important things with regards to work ex, people think just because I've accumulated work ex, it is enough. उससे फर्क नहीं पड़ता. एंड इट ऑल्सो डज नॉट मैटर कितनी हाई लेवल और कितना लो लेवल का वर्क इज. व्हाट मैटर्स इज यू रियलाइज इन द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ योर कंपनी, तुम्हारी कंपनी जो सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है, what exactly is your role in this entire value chain and how is your entire organization working towards it. तुम्हें organizational idea भी होना चाहिए, तुम्हारा your how are you a spoke in the wheel of your organization वो भी पता होना चाहिए. If you can make discussions, if you can have meaningful, fruitful discussions about that, that enables as in that is considered a good interview. तो इसके बारे में आई कांट इन्फॉर्म मोर. द फैक्ट दैट 99.86 पे भाई साहब हमारा FMS नहीं क्लियर हो रहा है और 996, क्योंकि ग्रेजुएशन तो दिखता नहीं FMS 99 है तो उस पर पूरे नंबर मिल गए थे. 99.86 में हमारा FMS नहीं क्लियर. आई डोंट नो, क्या पता तुम्हारी क्वांट और DILR बहुत अच्छी और BRC के अंदर कम हो तो शायद कॉम्पोजिट स्कोर वहां कम हो रहा हो. तो आई पता नहीं, देयर आर फार टू मेनी अननोन वेरिएबल्स. लेकिन द फैक्ट दैट नो इंटरव्यूज वर क्लियर्ड is a big red flag, क्योंकि इतनी परसेंटाइल पे ना कहीं हो ही जाएगा. तो देखते हैं. Hopefully this year maybe. अच्छा, ये भी I don't know if you've heard of this हरिवंश राय बच्चन line, अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, वो भगवान के मन का होता है. Although I'm an agnostic, maybe there is something better for you in future कि इस साल नहीं हुआ है, maybe next year अहमदाबाद और वट एवर अदर डिफरेंट प्लेसेस यू गो टू, सब जगह हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा. सो यू हैव don't think the system is rigged against you. It is more like identify the area you need to improve upon. Most likely interviewing is something you would need to improve upon, क्योंकि
और इंटरव्यू में ना ये समझना, however smart or not smart you are, however smart or not smart you, if you be fake, if you are fake, especially in an Ahmedabad interview, if you are if you are fake, if you try to pull off a scam कि ना हम तो ये कर लेते हैं, हम तो वो कर लेते हैं, भाई साहब वो जो तुरंत पकड़ते हैं, होपफुली वैसा नहीं हुआ हो। तो you have an excellent profile, you have an excellent you had an excellent percentile, you would need to get that again this cycle, लेकिन अच्छा रहेगा भाई, अच्छा मतलब अच्छा होना चाहिए, जस्ट कीप एट इट, आएगा ही आएगा कंट्रोल में। ओके, नेक्स्ट। Sir, I'm studying at Time Institute and few of my colleagues are getting very high score and I feel demotivated after looking towards his progress. इस लाइन के अंदर ही कितनी इंफॉर्मेशन आ गई। पहला, I am studying in Time Institute, that is fine. Colleagues are people you work with, these are your fellow students, so cool, and are getting very high score, बहुत अच्छा। I feel demotivated after looking towards his progress. अभी colleagues थे, अभी एक individual आ गया, भाई उसके score कैसे आ रहे हैं? At your times, you also might have seen multiple talented and God-gifted people who ace CAT with less preparation. They get very good result. It will be great point for us to learn how did you overcome brightest mind around you. Okay. I have a better story to offer than this. Back in the day, हमारे ज़माने में ना, there used to be, I don't know if it still happens in institutes, लेकिन हमारे ज़माने में ना, there was a commerce वाले बच्चों का batch, there was a science वाले बच्चों का batch. तो हम कॉमर्स वाले बच्चों के बैच में थे, बिकॉज आई डन बीकॉम, हम बीकॉम वाले ग्रुप में थे। अब एक कॉमर्स वाले बच्चों के बैच में भाई साहब क्वांट की क्लास के अंदर हम स्टड थे, हम उड़ रहे थे। मतलब टीचर ने सवाल दिया, सॉल्व कर रहे ना, तो हम ही तेजी से आंसर बता रहे हैं। इनफैक्ट हम जो 4 फ्रेंड्स आई टॉक्ड ऑफ, ऑल 4 ऑफ अस वर, वी यूज्ड टू सिट इन द बैक ऑफ द क्लास, और हम लोग आपस में बातचीत खी कू करते हुए पढ़ते भी थे और सवाल वगैरह भी। अगर क्लास में कहीं टाइम पास चल रहा है तो हम ही लोग कर रहे हैं, और अगर सवाल भी सॉल्व हो रहे हैं तो हम ही लोग कर रहे हैं, ऐसे वाले तो वी वर दी एक्सेलेंट बैक बेंचर्स ग्रुप। अब वहां पे, यहाँ पे तो हम स्टडली हो रहे थे, एकदम ही खतरनाक। चूंकि हमारे काम अच्छा चल रहा था ना, आई वॉज प्रमोटेड टू द साइंस बैच। नाउ इन दिस बैच आई हैड पीपल फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड डीसी एंड एनएसआईटी। ये वाला था इंजीनियर्स का भी एकदम प्रीमियम इंजीनियर्स वाले बैच में मेरे को डाला था। अब यहाँ पे जब क्लास चालू हुई, इधर सर का क्वेश्चन नहीं खत्म होता था। सर यूज्ड टू गिव अस वर्बली, दे गिव अस पॉइंट क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। सो इधर सर का सवाल नहीं खत्म होता था, ये सारे साइंस वाले फट 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 आंसर दे देते थे, साइंस वाले क्या इंजीनियरिंग वाले, और हम बस आजू बाजू देख रहे थे। तो आई वेंट फ्रॉम बीइंग द क्रीम ऑफ द क्रॉप टू बिकमिंग द एब्सोल्यूट स्कम, एकदम ही नीचे वाले लेवल पे हम आ गए, और मूड खराब हो रहा है, भाई ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। व्हेन आई, फिर हमने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करी, क्या हुआ कैसे हुआ, देन आई रियलाइज्ड ओके, these people had thought of these things or approached it this way back when they were doing IT JEE का prep. So I realized, ठीक है, I'm starting off at a point which is behind than where these people are starting off at. And these people were from premier engineering colleges. तो ये लोग भी अकलमंद लोग थे, ऐसे नहीं टाइम पास वाले लोग नहीं थे। वैसा my next target or my next goal was, ये लोग क्या सोच रहे, कैसे सोच रहे, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम लाइक देम, आई वॉन्ट टू बिकम बेटर देन व्हाट आई एम टुडे। तो हर क्लास के अंदर या जब भी उनसे इंटरेक्शन होती थी, या जब भी कोई वो सवाल वगैरह सॉल्व कर लेते थे, फिर हम धीरे धीरे आइडेंटिफाई करते, अच्छा हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, हम कहाँ आगे, अच्छा इसने ये बात बोल दी, अच्छा इसने ये बात बोल दी। वेरी स्मॉल लिटिल इंसाइट्स यू लर्न, एंड देन यू वर्क ऑन योर सेल्फ। एज ग्रेट एज द पीपल अराउंड यू मे बी, तुम्हें the only thing that is within your control is your own performance। तो चुपचाप से धीरे 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 करते चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। शुरुआत में हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ वो क्लासें हो रही थी, क्या होता है, क्वांट की क्लासें हो रही थी, तो हम तो काफी दुख में थे, भाई ये तो लोग तो हो रहे। मेरी दुनिया तब पलटी थी जब अंग्रेजी की क्लास हुई, हो जब इंग्लिश की क्लास हुई, फिर समझ में आना, ना क्वांट में तुम जीत जाओगे, अंग्रेजी में तो हम तुम्हें हरा सकते। फिर हम धीरे धीरे करके, आई आई बिकेम डिसेंट एट क्वांट, आई रिमेन्ड डिसेंट एट VARC, आई रिमेन्ड डिसेंट एट DILR, उससे काम चल गया। यू शुड नॉट फील डिमोटिवेटेड लुकिंग एट समबडी स्मार्ट। अगर वो तुम्हारा दोस्त है या कॉलीग है या फेलो क्लासमेट है या जो भी है, बस दोस्ती करो, थोड़ी बहुत बातचीत करो, और फिर पता करो कि भाई हाउ आर दी अप्रोचिंग क्वेश्चंस। ये मत पूछना तुम कैसे पढ़ाई करते हो, तुम कैसे करते हो,
solve of 10-12 questions along with them. तुम अपना तरीका बताओ, अपना तरीका बताएगा. You'll see some deviation. Either their calculational speed is extremely fast. जैसे I am not a very fast calculating person. से ज्यादा तेजी से मैथ्स होता नहीं है. But then again, and that is my fervent belief, मेरा calculation fast नहीं. But I have been told आपका calculation बहुत fast है. क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट होना नहीं होना बहुत रिलेटिव काम है. कंपेयर टू समबडी जिसको 2 डिजिट नंबर इंटू 2 डिजिट नंबर करने में दिक्कत होती है, मेरा कैलकुलेशन उससे फास्ट है. लेकिन कंपेयर टू समबडी जिसको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पता नहीं क्या क्या चीजें आती है, मेरा कैलकुलेशन उससे बहुत खराब है. मतलब आई हैड अ किड इन वीटा 1. आई हैड अ किड, आई थिंक इट वाज अर्पन. ऐसी हालत थी, जब भी अगर 3 डिजिट नंबर इंटू 2 डिजिट नंबर करने की हालत आ गई क्लास में, तो हम सीधा बोलते अपन बता दो, हम तो कर ही नहीं रहे. एंड वो मस्त फटाफट करके बताता था. एंड द क्लास वाज ऑन बोर्ड. हाँ, इस लड़के को आता है, ये सब कुछ कर पाता है. तो कंपेयर टू हिम माय कैलकुलेशन वाज एक्सट्रीमली बैड. बट देन अगेन आई रियलाइज हर चीज में अपने को जीतना भी नहीं है. नाउ लेट्स से आई एम अगेन अज्यूमिंग स्मॉल लिटिल डिटेल्स. योर द फ्रेंड यू आर टॉकिंग ऑफ, ही इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, you are from commerce background. The engineering background person has a much higher mountain to climb than you have in terms of percentile or score. Or maybe let's say he's male, because he's male and you are not male. भाई, तो फिर he has a much higher climb. तो किसी और से देख के या तो उससे इंस्पिरेशन लो या फिर इग्नोर मारो. The only thing in your control is your own performance. The only thing in your control is अपनी पढ़ाई. तो शांति से बैठ के उस पर ध्यान दो, चलेगा. Okay, I'm a college going final year student. How should I balance out between learning new concepts and approaches, Q and DILR, given that only 40% syllabus of each is covered by me till now, and revising old stuffs and giving analysis of mocks for upcoming months till CAT so as to maximize my score in CAT. If you could tell me a time breakage in hours per day for 3 portions of learning, revising and mocks, it would be very helpful. It would indeed be very helpful, but it would also be very misleading, my friend, because अभी तो तुम्हें mock देना भी नहीं चाहिए. You've only done 40. I don't know how you're arriving at this number of 40% of each, but ठीक है, अभी तो मैं मॉक देना भी नहीं चाहिए. साथ के साथ एक I'm surprised I don't have more questions of this nature. ये समझिए, whether you have a year left or you have 2 months left, the steps in CAT prep remain the same. The only thing that changes is the pace at which you cover it. आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, हर पर डे का कवरेज क्या रहना चाहिए. अगर आप कॉलेज गोइंग फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, दैट इन नो वे चेंजेस. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको अभी पहले यू हैव टू एंश्योर दैट द सिलेबस दैट यू वांट टू कवर, दैट इज डन अप्रोप्रिएटली. पोस्ट दैट, वंस यू स्टार्ट टेकिंग टेस्ट, इमोशनल बैगेज होपफुली नहीं रहेगा. हम अभी कॉलेज में ही है, तो बस अच्छा, I have 2-3 ideas coming in mind. इमोशनल बैगेज मत रखना. अगर अपने नंबर ज्यादा ठीक ना आए शुरुआत के, तो इस पे ध्यान रखना कि whatever learnings I can take away from a mock, that remains. Secondly, final year college students, and I'm certain there are people जो आगे पीछे की कहानी खेलते हैं, इस ट्रैप में मत पड़ना. हम तो इस साल बस कैट एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं. अगले साल मेरा सीरियस अटेम्प्ट होगा, या हम 2 साल का वर्क एक्स जमा करने के बाद देंगे. दैट इज लूजर टॉक फॉर इस साल की तैयारी मेरे को टफ लग रही है, तो हम आगे जाके देखेंगे. देखो, अगर तुम ये बोलो ना कि हम नहीं करना चाहते इस साल, बहुत मेहनत लग रही है, हम आगे जाके करेंगे, चलेगा. बट खुद के साथ ये स्कैम मत करना कि नहीं नहीं, क्या मेरा तो फाइनल ईयर बहुत टफ हो रहा है. क्योंकि अगर तुम्हारा फाइनल ईयर टफ हो रहा है, तुम्हारे ही कॉलेज में किसी और का भी फाइनल ईयर टफ हो रहा होगा, और वो निकालेगा या वो निकालेंगे, तो फिर पे अटेंशन. दैट इज नॉट अ valid excuse for not studying for CAT. The fact that you are prioritizing something over CAT prep, that is fine. Be very absolutely open and upfront about it. इसको हम प्रायोरिटी दे रहे, दूसरों को नहीं दे रहे. उसके बाद प्रिसाइज टाइम पर डे हम बोल रहे मस्त एकदम भाई, 3 hours quant or 3 hours DILR or 3 hours VERC. But then hopefully you understand it has no basis in reality. I don't know what is your level of proficiency in quant, your level of proficiency in DILR, and your level of proficiency in VARC. I have no idea what your college timing commitments are like. All I can tell you is हर चीज धीरे धीरे प्यार से करना. Understand everything.
Best case, we understand everything, we take mocks, we learn wonderfully from them, we crack CAT in this cycle, we go to whatever कहानी हमने काम करा दिया. Worst case, इस साल CAT नहीं निकला. All the work you still do will be relevant for the next cycle itself. The work should not be compromised upon. I'm not saying do it slowly. I'm saying do it thoroughly. Whether it takes more time or less time is dependent on your skill level, but make sure you do it thoroughly. इस साल निकल गया तो nothing like it. नहीं भी निकला, अगले साल का काम तो एडवांस में हो रहा है ना. No effort will ever go unrewarded. No effort ever goes in vain. वो अच्छे से कर लेना. That is all the advice I can give you on that front. Why am I charging for mocks this year? Last 2 years they were free. I'm charging them for them because I want to charge for them. बस इतना ही है. Last 2 years they were free. Yes, last 2 years they weren't mocks exactly. QA sectionals and DLR sectionals they last year, and last year there were some QA sectionals that were free. This year it is a full package, full course, full things. और हमने ये भी देखा भाई, देखो फ्री, देखो एक तो कैसे समझाएं, I had roughly 1,000 enrollments, 1,000 plus enrollments for QA sectionals that I offered last time. And the number of attempt takers for mocks were close to 25 to 30 per test, which is another way of saying, जब free रखते हैं तो कोई देता नहीं है, और फिर कौन सरदर्दी पाले. उससे अच्छा I am providing you with an incentive for not enrolling in case you are not serious about it. तो वो कहानी चल रही, क्योंकि prices wise देख लो, this is very much at the lower end. Additionally, इस cycle I have the bandwidth of providing a fuller bouquet of services. तो हम अच्छे से काम चला रहे हैं. तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना मत लो. I don't know where this strength of character comes from for asking me for. I'm providing some service. तुम्हें नहीं लेना है मत लो. तुम ये पैसे कैसे मांग रहे तुम? क्योंकि मेरे को मन है भाई मांगने का. तुम अपने काम से काम रखो. Okay, is it too late to start prep for CAT given you are closed enrollments on 31st May? Will there be any crash course from your institute? For the second part, no. For the first part, is it too late to start CAT prep? Absolutely not. It is never too late to start CAT prep. Maybe it is not ideal time to start CAT prep for CAT 2023 cycle, but maybe for CAT 2024, this is an ideal time to start. Additionally, even for CAT 2023, one cannot claim that you cannot crack CAT if you start now. Why I close enrollments on 31st May is simply, I don't think, or at least enrollment to the live classes at that time, is I don't think I can provide much of value to people who join after 31st May. In term, क्योंकि उसके बाद निकालने वाले लोग वो होते हैं ना जिनको मेरी हेल्प की जरूरत है भी नहीं, वो ऐसे ही खुद से ही फोड़ने वाले लोग हैं. So देख लेना, if you fall within that group, तो फिर I have nothing to offer. I have a 31st May deadline for accepting people that I can help. It is not so much an indictment of उसके बाद CAT निकल सकता है कि नहीं निकल सकता. Okay, all the questions in the file are done. So let me go to the YouTube questions. चलो पढ़ना चालू करें. First question that I have my moderator to thank for this. He has compiled the questions. First question he has sent me is IFT this time through CAT. I neither know nor care. To the best of my knowledge, IMS did highlight it in the group on Telegram कि ऐसा है, IFT का नाम तो है उसके अंदर. So credit to IMS. They have super sleuths sitting around who are looking for this. In the grand scheme of things, does it really matter for us? अगर अच्छी, I would be extremely happy if IFT came in via CAT, not because मतलब IFT का पेपर देने में मतलब IFT का पेपर बड़ा गंदे से कंडक्ट होता है. एनटीए ने इतना खराब किया हुआ है आईएफटी का पेपर, इतना खराब किया हुआ है. सेंटर पे पानी नहीं होता, पेन नहीं मिलता, पेपर नहीं मिलता, टाइमर नहीं चलता, क्वेश्चन के इमेज नहीं डिस्प्ले होते, स्क्रीन खराब होते हैं, अजीब अजीब ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैव हैपेंड विद आईएफटी एग्जीक्यूशन इन द पास्ट. एंड इफ आईएफटी डज कंडक्ट अ सेपरेट एग्जाम दिस टाइम, you can expect more of the same. If IFT comes under CAT, it would be nice, but even if it doesn't, कुछ कर नहीं सकते. These are things beyond our control. We'll only know when IFT comes out with an official notification. For the time being, yes, there was IFT mentioned as a list of non-IIM institutions that are accepting CAT score in this cycle.
but is that for the IFT core course or is that for one of the additional courses that they have on offer? पता नहीं, देखी जाएगी. मुझे सीएल का मार्क 4K में मिल रहा है और टाइम का 5.2K में मिल रहा है, कौन अच्छा रहेगा? देख लेना. आई डोंट नो अगर सीएल का मॉक में 4K में इफ यू हैव ऑल दी, देख माय गाइडिंग लाइट इज बिटवीन सीएल आईएमएस एंड टाइम. द बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज इज द वन दैट यू गेट फॉर चीपेस्ट. सो जो तुम्हें सस्ते में मिल रहा है ले लो, बट इंश्योर करना जो भी टेस्ट सीरीज लो ओमेट्स एंड एवरीथिंग के बुके के साथ लेना. सिर्फ कैट कैट ना हो, उसके अंदर एनमैट भी हो, स्नैप भी हो, जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम रहते हैं वो सारी चीजें लें. आईएफटी आइडियली होना चाहिए था, बट आईएफटी की अब लोड ही नहीं है क्योंकि आईएफटी आ ही नहीं रहा. शायद ऐसा हो जाए तो ठीक है. मेक श्योर यू हैव दी अदर बुके, जो भी चीपर हो ले लेना. टाइम सीएल आईएमएस तीनों में से कोई भी एक ले लो, चलता है. ओके. I was horrible in LRDI 2 months back, getting single digit scores. Currently have managed to reach a level that I can solve 9 to 10 questions. What can I do to level it up further? The same thing you've been doing so far. Of course, the pace of ascent will not be as high, लेकिन वही काम करना पड़ेगा. थोड़ा बहुत सॉल्व करते रहो, थोड़ी बहुत चीजें सीखते रहो, and still there will be tests in which you'll be able to solve only 9-10 questions. There will be tests in which you'll be able to solve 15-16 questions. 9-10 questions पहुंच गए. If you are consistently solving 9-10 questions, that is an excellent level to be at. Because ध्यान देना अभी भी ना जुलाई चल रहा है, अभी कैट एक्चुअल आने तक बहुत टाइम है. बाय द टाइम कैट रोल्स अराउंड, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग, इट्स एज जिम जा रहे हैं ना, मेरे मसल्स बन रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, यू कीप डूइंग द रेप्स ओवर एंड ओवर अगेन. यू डोंट हैव टू डू आज हम चलो खतरनाक उड़ाना चालू करते हैं, उतना हैवी काम नहीं करना. वट एवर यूर डूइंग मोहित, दैट इज वंडरफुल. I have Miraj Chavan asking for, I'm preparing for CAT 2024. I wanna join your coaching, but almost 5-6 months are left for next batch. So I'm doing Arun Sharma right now. Any preliminary suggestion? Yes, don't do Arun Sharma right now. Live your life. Enjoy. You will probably, you'll probably have, क्या बताएं? These would be the best days of your life. Enjoy. लोगों के साथ घूमो फिरो बातचीत करो. Once the course starts, you will not have time for your social life. मे बी अगर कोई हमारे कोर्स का बच्चा है तो चैट में उसको बता दो भाई, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कम्स योर वे विल कीप यू बिजी. तो अभी 5-6 महीना अरुण शर्मा वगैरह करने का मन नीड नहीं है. तुम्हें मन है तो बिल्कुल कर लो. अरुण शर्मा करना है तुम्हें, सर्वेश कुमार वर्मा करना है तुम्हें, और जो भी क्वांट की किताब, निशित के सिन्हा एक है, तीसरा तुम्हें कोई भी क्वांट की किताब करनी, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने, आई वुड एनकरेज यू टू एंगेज इन प्रोडक्टिव टाइम पासिस. व्हाट आई मीन बाय दैट इज यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक रील्स नहीं, इंस्टाग्राम रील्स होते हैं, और फेसबुक जो भी रहता है वो सब पे मत देखना. डू फन पजल्स, डू रीड बुक्स, ये सब टाइम पास करो. ज्यादा क्या बताइए, सॉल्विंग मोड में मत आना, एक्सपीरियंशियल मोड में आना कि भाई अकलमंदी चीजें कर रहे हैं जिससे मजा आएगा. बुक्स में अगर चालू करना ही है, इफ यू आर अ नोविस लेवल रीडर, तो एनिड ब्लिटन फेमस 5 से चालू कर लेना. इफ यू आर मॉडरेट लेवल रीडर तो फिर यू कैन मूव ऑन टू सिडनी शेल्डन्स ऑफ द वर्ल्ड. If you're an advanced level reader, you've read significant amount of books and everything, then author I would highly recommend is start off with Fountainhead. पहली book Fountainhead पढ़ना. Next Atlas Shrugged पढ़ना, Ayn Rand. There are certain flaws in the क्या बताएं philosophy of this person, Ayn Rand, but then these stories are extremely क्या बताएं, जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदलने वाली. So if you can read that, it would be wonderful. Will Anastasis provide any free mock? Uh, I don't know if you've gone to the website देखेंगे तो there is a trial mock available for every course. So free mock तो कुछ नहीं, वहाँ पे trial mock है, आप देख सकते हैं. Tanish Singh, I am a repeater from arts background general and my Achilles heel last time was QA. Achilles heel, क्या बात है. This time I'm covering QA very deeply and in the right way, but it's taking a lot of time. Only algebra done. Shall I continue in this way? देखिए, if you're covering it very deeply, that is absolutely fine. But it's taking a lot of time. Only algebra done. If you're a repeater and only algebra is done, I don't know what you mean by doing it very deeply. तो I have absolutely no clue कि भाई I have absolutely no clue कि भाई वो क्या है. When you say you are doing it deeply and in very डिटेल्ड मैनर, इतना प्रोफिशिएंसी. अच्छा,
किसी भी टॉपिक में, लेट्स से QA इज नॉट योर स्ट्रॉन्गेस्ट, I'd give you a categorization level. बेसिक क्वेश्चन ऑफ हर टॉपिक तुम्हें करना आना चाहिए. बेसिक क्वेश्चन, तुम किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, बेसिक क्वेश्चन, यू आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस ना, तुम्हें कम से कम 10 से 11 सवाल ऐसे रहेंगे जो पक्का बेसिक वाले होंगे. उसके बाद 8-9 सवाल ऐसे रहेंगे जो मॉडरेट वाले होंगे. 3-4 सवाल ऐसे रहेंगे जो अल्ट्रा फाड़ रहेंगे, अल्ट्रा फाड़. तो what your target should be if you are not very proficient at quant, and I'm hoping it is supported by a corresponding high level of proficiency in ERC. मतलब एक बहुत ही प्यारा bifurcation हम खेलते हैं. For anybody who is planning to achieve significantly in CAT, तुम्हारा ना टारगेट ये होना चाहिए either 40-30-30 या 30-30-40. These are the baseline scores you should be starting with. मतलब यहाँ पे VA से चालू है, फिर DILR है, और फिर QA है, और वही का कहानी. अगर तुम्हारा क्वांट हैवी है, क्वांट ज्यादा अग्रेसिवली आगे है, तो ये सब चलेगा. बट इसी के अंदर समझो, यू ऑल्सो हैव लोअर लिमिट्स ऑफ, यू कैन एडजस्ट योर टारगेट्स, बट नथिंग बिलो 25 पर सेक्शन. मे बी DILR में 20 तक भी चलेगा, बट तुम the numbers that you should be consistently hitting per section are 40, 30 and 30 if your VA is the stronger section. क्योंकि अच्छा, इसके अंदर ध्यान देना, conspicuous by absences, किसी का DILR strong नहीं होता है. Nobody is in a place कि भाई मेरा VA weak है, मेरा QA weak है, लेकिन मेरा DILR बहुत strong है. ऐसा कोई होता नहीं है. So whichever section is stronger out of your VA और QA, उसके अंदर कोशिश करो भाई 40 तो हम निकाल ही देंगे, उसके अंदर हम 40 निकाल ही देंगे. उसके बाद बाकी दोनों सेक्शन के अंदर 30-30 ले आओ. 100 नंबर बनाने का टारगेट है आपका. अच्छा, दिस इज द टारगेट दैट यू हैव. You can also perhaps, if you're extremely strong in QA, if you're extremely strong in QA and you can push your score up to 60, wonderful. You can perhaps adjust your score lower in VA and DILR. लेकिन 25 के नीचे मत जाने देना पर सेक्शन. 25 के नीचे गया, फिर अब ना सेक्शनल कट ऑफ मीट करने के चैलेंजेस आने चालू हो जाएंगे. इसके नीचे मत जाने देना. तो DILR के अंदर मे बी इवन टिल 20, लेकिन this has to be the starting point. This is the framework with which I would recommend people start off with. ये टारगेट्स मेरे को हिट करने. Then again, this is for like क्या बताएं, a person targeting 99. This for target for a person hitting 99. Most of you would not be hitting this target right now क्योंकि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट आ रहा है. टेस्ट बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं. दैट इन नो वे मीन्स दीज टारगेट्स आर नॉट टू बी टारगेटेड. इनके पीछे ही भागना. मेरे को VA में 40 लेके आना है या मेरे को क्वांट में 40 लेके आना है. बाकी दोनों सेक्शन में हम कम भी कर रखे तो चलेगा. नाउ फॉर दोज ऑफ अस टारगेटिंग 100, अपने को कम से कम 40-30-50 40-30-50 की दुनिया खेलनी पड़ेगी. बट भाई ये एस्पिरेशन के हिसाब से whatever your stronger section is, उसके अंदर थोड़ा ज्यादा, बाकी सबके अंदर थोड़ा कम. सो तनीश's क्वेश्चन वेयर QA का कहानी चल रहा है. अगर QA के अंदर मेरे को 30 लाना है, वर्स्ट अभी 30 लाना है, अभी 30 लाना है, तो मेरे को क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. द फैक्ट दैट ओनली अलजेब्रा इज डन बाय द एंड ऑफ जुलाई फॉर अ रिपीटर इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज रेड फ्लैग कि मे बी वी आर गोइंग इनटू प्रॉब्ली अननेसेसरी डेप्थ. अगर अच्छा, आई विल पुट इट यू दिस वे, हमें e⁻x का ग्राफ बनाना अगर आता है तनीश, अगर हमें e⁻x का ग्राफ बनाना आता है, यू आर डूइंग इट इन टू मच डेप्थ. उतना नहीं जानना है. e⁻x का ग्राफ ओनली गेट्स टेस्टेड इन द मॉक ऑफ टाइम, और कहीं नहीं पूछा जाता है. या इफ यू नो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, इट ओनली गेट्स टेस्टेड इन अ मॉक ऑफ टाइम, और कहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है. सो इफ यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट टू बी, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, चल जाएगा. बाकी if you're doing it in depth, if you're doing it in great detail, that is absolutely commendable. करना भी चाहिए वैसे ही. But then also don't go down the rabbit hole of आज तो हम मैथ्स ऑनर्स वालों से भी ज्यादा ही सीख जाएंगे, उतना QA नहीं सीखना अपने को. मतलब क्या समझाए, मेरे को कॉशी नहीं आता है, मेरे को टोलेमीज थ्योरम नहीं आता है, मेरे को कई सारी चीजें नहीं आती है, मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं आती है. पर हम हर साल कैट दे लेते हैं और मेरे से सवाल निकल जाते हैं. दीज आर थिंग्स दैट हैव कम इनटू द कैट इंडस्ट्री क्योंकि दे वर प्रेजेंट इन इंजीनियरिंग. और फिर ना व्हेन
our market is majorly engineering dominated, not a bad thing, it helps us improve, but उसके चक्कर में बहुत सारी बातें ऐसी घुस गई है ना, which is not really relevant for cat. So थोड़ा simply अच्छी चीजें, be a little more discerning of what needs to be covered, what needs not to be covered. अगर वो ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा. Okay, next. My sectionals are amazing. One, they are not my sectionals. The entire work is done by interns and it is from mocks of other institutes. तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते. I have not done anything. तो वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं. I have amazing set of free practice. I don't have amazing interns do that work. अगर करना ही है, अगर करना ही है सब कुछ अच्छे से, मतलब इफ यू वांट टू गिव तारीफ तो ग्रुप पे जाके इंटर्न्स को थैंक यू बोल दो. हम आई विल फॉरवर्ड दीस मैसेजेस टू देम, लेकिन इंटर्न्स को कर दो. हम नहीं कर पाते भाई, हम कुछ नहीं करते. Even I am doing your daily DLR, but still I am not able to attempt DLR question when given. What else I must do? You must do more practice. That is it. और कुछ नहीं. मतलब there is no magic गुट्टी for that. घूम फिर के मुंडे नीचे करके काम करते ही रहना पड़ता है. तो इफ यू कीप एट इट तो आएगा ही आएगा रेंज में. देखो बेसिक इंटेलिजेंस, इफ पता है, one of the biggest signs of intelligence is realizing what you don't know. So when you've identified कि अपने से DLR में दुख हो रहा है and we don't have an emotional response, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मेरे तो जिंदगी तबाह हो गई, everything is bad for me. If you're reacting that way तो बहुत दिक्कत है. If you're reacting अच्छा DLR के अंदर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं. You have sets of questions available wherever you're studying from. You would have some theory portion available. Theory portion एक बार जल्दी से theory portion खत्म कर लीजिए, उसके बाद sets लगाइए. अभी ना फॉर मोस्ट पीपल स्पेशली DILR के अंदर द बिगर चैलेंज इज उन्होंने इतनी वेरिएशन ही नहीं देखी है सेट्स में कि जब वो एग्जाम में फर्स्ट टाइम देख रहे होते. मोस्ट पीपल हु आर एक्सेलेंट एट DILR, मोस्ट पीपल हु आर एक्सेलेंट एट DILR, most, or I would say 99 out of 100, they're excellent because they have gone through so many sets, they have gone through so many variations that they are able to understand what the question is saying. For others who have trouble with DILR, it is mainly because उन्होंने इतने कम सेट्स किए हुए होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता भाई अच्छा इसका मतलब क्या है. मतलब one of the more common instructions in an arrangement or distribution set, the name of the person, the surname of the person, the city that he lives in, the city that he's visiting, and the name of the car, all of them begin with different letters. Anyone who has solved arrangement distribution के सवाल would know how common this instruction is or coming in various forms. लेकिन किसी को अगर पता चल रहा है तो किसी ने अगर ये ध्यान दिया तो दिया. अब इसी का एक काउंटर इंस्ट्रक्शन रहता है which is confusing and comes in some places. The scores obtained by people in different tests are different. The score obtained by different people in different tests are different. इसका मतलब है टेस्ट 1 में हर किसी के पास अलग अलग रैंकिंग रहेगी या हर किसी का अलग अलग स्कोर रहेगा. That does not mean from test 1 to test 2 a person cannot have the same score. Basically अपना दिमाग डिफॉल्ट में सुडोकू सोच रहा होता है, but in the instructions of the questions you can end up in a situation जहाँ पे कॉलम में सब कुछ अलग होना है लेकिन रो में सब कुछ अलग नहीं होना है. That sort of cleaning and refining only happens with more and more question solving. That is all that I can say. The work that is done on the free tests, free groups, free kahani jo chal rahi hai, all of that is done by the interns. They do excellent work. I have very little input there. So if I, in fact, I name them. We have Rajesh and we have Ritika and Gaurav and Muskan and Chaitanya and Sailesh. एक मिनट गिनने दो कितने लोग हैं. Yeah, these people are there. ये सारे लोग मस्त काम करते हैं and we have Patrick from last year also doing absolutely wonderful work. तो ये सारे लोग सब कुछ काम करते हैं. I have absolutely no credit there. वही लोग सारा काम करते हैं, वही लोग सब कुछ मैनेज करते हैं. Right from reasoning rational to quizzes, GK quizzes and current affairs quizzes and QA वाला टेस्ट और DILR वाला टेस्ट और VARC वाला टेस्ट सब कुछ वही लोग करते हैं. That is entirely to their credit. Tanish Singh, I had talked of it earlier. When volatility is a part of life, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा ही. Whether your accuracy is circumspect or your accuracy is more क्या होता है reliable,
It depends on the questions that you are confident in, what is your accuracy there. The ones that you are absolutely certain कि ये तो ठीक होना ही चाहिए, वहां पे क्या खराबी चल रही, and so when you're attempting the test, question 1, question 2, question 3, question 4, you write that down, and then along with it, I'm absolutely certain, I'm moderately certain, I'm not very certain, mark those down as well. उससे आप देख लेना VRC के ऊपर का डिस्कशन जो हुआ था, I think that would be useful for you. तो बस जनता अब ना, I think this should be enough. कहाँ गए? Let me check one wonderful thing. Okay. That should be all, people. Go home, all, and as is the norm, claiming I will finish it in half an hour and it takes 1.5 hours क्योंकि हम टाइम देख के नहीं बात करते. Okay, go home. Bye bye. Thank you very much.